हेलो पिला माने जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। सो आज आम डिस्कसन करूँ आपण मानकर लर्निंग एंड टीचिंग रो लास्ट नंबर यूनिट नंबर 5 लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग मैनेजमेंट विषय आज आम पढ़ा। सो चलतु डेरी न करके आज क्लास टी स्टार्ट करवा। फर्स्ट आम जाना कौन लर्निंग एनवायरनमेंट कौन पढ़ाई गोटे एनवायरनमेंट दरकार गोटे भल माने सुइटेबल एनवायरनमेंट नहेले पिला माने कौन इफेक्टिवली लर्निंग करें। Learning environment refers to the diverse physical location, context and cultures in which students learn. ताको कहा जाए learning environment. This is all the physical, social, psychological and cultural environment in which students learn, and the environment help the student to engage best in learning activities. तो से कौन कहला ना लर्निंग एनवायरनमेंट कहले क्या क्या बुझाए ना फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी रहा जमीक कि बेंच डेस्क है सोशल साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन व्हिच स्टूडेंट लर्न जोटी कि स्टूडेंट पढ़े एंड ना एनवायरनमेंट कौन हेल्प करे ना स्टूडेंट को एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस रे इन्वॉल्व होबारे हेल्प करे. Learning environment also links to resources that are important for learning. जमती कि ICT टूल है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल जी है आमर टीचर्स है स्टूडेंट है लैब्स है लाइब्रेरी है एगुड़ा सब लर्निंग एनवायरनमेंट रे जाउची. There are an infinite number of possible learning environment which is makes teaching more so interesting. तो आमर बहुत सारा लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छी जो गुड़ा कि कौन करे टीचिंग लर्निंग को अधिक इंटरेस्टिंग करे. तो ये गोटे ओवरऑल गोटे डायग्राम बनाई लर्निंग एनवायरनमेंट कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी उपर मेनली फोकस करे नॉलेज सेंटर लर्नर सेंटर आ गोटे कौन असेसमेंट सेंटर. The term environment encompasses learning resources and technology, means of teaching, modes of learning and connection to societal and global context. The term also include human behavior and cultural dimension, including the vital role of emotion in learning. तो आउ कौन इनक्लूड अच्छी ए ना लर्निंग एनवायरनमेंट रे ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चरल जी डायमेंशन रहा सेगुड़ा भी इनवॉल्व थाए. The learning environment is a composite of human practices, material systems such as ecology is the combination of living things and the physical environment. Developing a total learning environment for student in a particular course or progress is probably the most creative part of teaching. तापरे दे विल ऑल्सो इनक्लूड आउ कौन कौन इनक्लूड थाए ना द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर द गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द एक्टिविटीज दैट आर बेस्ट सपोर्ट हो बेटा सपोर्ट लर्निंग द असेसमेंट स्ट्रैटेजीज दैट विल बेस्ट मेजर एंड ड्राइव लर्निंग. देन आम जाना फैक्टर्स टू बिल्ड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट गोटे पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने कौन कौन फैक्टर दरकार. फर्स्ट तो क्रिएट ए सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट गोटे सपोर्टिव आ गोटे कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो टीच एज पर लर्नर्स नीड जमी पिला माने चाहूँगी से हिसाब से ही आम पढ़ाइबा आवश्यक से हिसाब से ही करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनवा आवश्यक. मेक पॉजिटिव एटीट्यूड गोटे टीचर सब बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड माने स्टूडेंट को शो करवा आवश्यक. प्रोवाइड टाइम टू फीडबैक रिवार्ड और इन्फोर्समेंट रिवार्ड मध्य रहिबा आवश्यक. क्रिएट ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल द लर्नर्स रेस्पेक्टिंग एवरी स्टूडेंट्स एंड देयर नीड्स क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम प्रॉपर क्लासरूम लेआउट एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत भल हाँ आवश्यक ना पिला भितर झगड़ा हो कंफर्टेबली बसी पारे. प्रॉपर लैब्स लाइब्रेरी सिस्टम थी लैब एक्सपेरिमेंट लैब थी. The teacher has main responsibility for creating an appropriate learning environment, but it is also important to consider learning environments from the learner's perspective. Then asila learning engagement कौन ना it can be defined as the how the student are engaged in all kind of learning activities क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. तो माने कौन ना गोटे पिला केते परिमाण रे बा केमिति लर्निंग रे एंगेज रोची क्वालिटी माने केते क्वालिटी रे आ केते क्वांटिटी रे.
The learning engagement makes every learning experience as compelling and engaging as possible through 5 strategies. तार 5टा strategies अच्छी. First आसला personalization and support. ने कौन that adapts to student and require their decision. ताको कौन करे पर्सनलाइज करे एक्टिविटीज दैट रिक्वायर हायर ऑर्डर थिंकिंग. जहाँ भी एक्टिविटी दिया जाए आम कौन क्रिटिकल थिंकिंग करूँ आउ कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग रे इंगेज रहू आम क्रिएटिविटी शो करूँ. देन आसला रिसोर्सेज दैट आर मल्टीमोडाल विथ सम कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट. देन आसला कोलाबोरेशन. कोलाबोरेशन माने कौन समस्त को कोलाबोरेट करिया दैट इज एनी टाइम एनी प्लेस कल्चरली एंड ग्लोबली डाइवर्स. देन आसला फीडबैक दैट इज टाइमली स्पेसिफिक order oriented towards performance improvement. देन आसला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेज लर्नर. गोटे पिला जी एंगेज होची तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थी ईगर टू लर्न माने पढ़िया इच्छा शक्ति थी ईगर थी मोटिवेटेड होइतो जेमिति अन्य मानकु मध्य कौन से करि परथो मोटिवेट करि परथो इंटरेस्टेड होइतिबो एक्टिवली पार्टिसिपेट करूथबो अटेंटिव होइतिबो कंप्लीट वर्क ऑन टाइम ताको जहाँ भी काम दिया जिवो से पर्टिकुलर टाइम रे सारी परुथिबा दरकार. देन आसला स्टेप टू एनहांस एंगेजमेंट. तो कौन कौन स्टेप अच्छे टू इनवॉल्व द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू इफेक्ट कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन. आम जाने ब्लूम्स देते ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से शो करते सब यू फेज गुड़ाक टू क्रिएट लर्निंग प्रोसेस एज पर द एज एंड लेवल. पिला मानकर पर्टिकुलर एज देखिकी आम लर्निंग प्रोसेस टाकू कौन करा दरकार माने सही अनुसार प्रिपेयर करिया दरकार. जो लेवल रे पिला जेतिकी पाठ पढ़ी परिबो सही अनुसार ही करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनेबा आवश्यक. टू चेंज एंड टू फ्लो ऑफ लर्निंग टाइम टू टाइम. कंटेंट शुड बी इंटरेस्टिंग. सब बड़े कंटेंट पढ़ेबार कंटेंटा इंटरेस्टिंग होइतिबा दरकार. शुड एनहांस डाइवर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनहांस करूथबो आउ कोन इनक्लूड प्रैक्टिकल लर्निंग. तो पिला सब बड़े रियल लाइफ सहित माने कोन रिलेट करि पारुथबो प्रैक्टिकली सब जिंस को जानि पारुथबो. द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलुस्ट्रेट ए फ्यू वेज इन व्हिच लर्निंग एंगेजमेंट मे बी डिस्कस्ड इन स्कूल. तो कौन 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 रही आमर जो कौन कौन आमर रही सब वे से सब विषय आम पढ़ा. सो फास्ट आसला आमर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट. इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट कौन टू इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट इन ए कोर्स और सब्जेक्ट. टीचर्स में क्रिएट लेसन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दैट एपेल द स्टूडेंट इंटरेस्ट. देन आसला इमोशनल एंगेजमेंट कौन इमोशनल एंगेजमेंट इज एन एंथुसियाज्म for learning in school. When students are emotionally engaged they want to participate in school. Then asla behavioral engagement kono this refers to participation of student in any learning activity with positive attitude. Then asla physical engagement kono teacher may use physical activities to stimulate learning or interest. For example kinesthetic learning refers to the use of physical motions and activities during the learning process. Then asla social engagement. Social engagement कौन ना teachers may use a variety of strategies to stimulate engagement through social interaction. And then last थिला हमरो आ गोटे वे कौन cultural engagement. Cultural engagement कौन school may take active step to make students from diverse cultural background and feel welcomed accept and safe and valued. तो से सब विभिन्न प्रकार कल्चरल कौन सब जहाँ भी रहा कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करो जमती कि पिला गोटे निज माने पिला को वेलकम करूथबो से सब जिंस आउ ताको एक्सेप्टेड फील होथबो सेफ फील होथबो आउ तार वैल्यू गोटे अछि बोली ताको लागुथबो. इसला मोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट. आमे केमिति गोटे पॉजिटिव आउ प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करिवा. Classroom that is orderly and focused on learning creates productive and positive learning environment. जदि गोटे क्लासरूम पिलार डेभलपमेंट उपर फोकस करिवो केमिति लर्निंग टे कोरी इफेक्टिव करि परिवो ता उपर फोकस करिवो देले जाई कोन गोटे प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जदि गोटे हेइतिवो ताहाले जाई एटा पॉसिबल होबो ना. Students feel emotionally and physically safe in the daily routines, learning activities and standards for appreciate behavior are all designed to promote learning. In productive classroom student are well behaved. गोटे productive classroom रे student माने कोन सब भल व्यवहार करंती
productive learning environment so important because they allow student mone rakhantu that allow student to learn and teacher to teach goal of classroom management. तो गोटे productive learning environment teacher को allow करे ता सहित student को मध्य allow करे पढ़िबा पई और teacher को allow करे कोन ना ताको goal टा को achieve करिया पई. It contribute to learners academic personal and social development. तो एटा कौन पर्सनल एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट रे मध्य हेल्प करे. Then asila effective managers have 4 primary goals. Normally 5टा primary रे goal थाए. First होची कौन creating a positive classroom climate, creating a community of learners, developing learners responsibility, maximizing opportunities for learning. First asila कौन creating a positive classroom climate. Students learn more and are happier when the classroom we create are safe and supportive, an environment in which learners feel physically and emotionally safe, personally connected to both their teacher and their peers, and worthy of love and respect. Then asila creating a community of learner, a classroom environment in which the teachers and the student work together to help everyone learn, inclusiveness and support in a learning community. All the students participate, support each other's learning and believe all can succeed. Then asila developing learners responsibility. आउ कौन करे ना लर्नर मानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाए. लर्नर्स obey rules because the rules make sense and when they recognize what rules exist to protect their rights and the right of others. This responsibility also contributes to ethical thinking and characters development by promoting student responsibility and understanding teachers actually make their jobs easier. Then asila कौन maximizing opportunity for learning. Academic learning कौन करे ना depends on 2 factor. First time available for learning, आ गोटे होछु the effectiveness of teacher. केते कम टाइम रे गोटे गोटे टीचर टे इफेक्टिवली पिला मानन को पढ़ाई परिबो. क्लासरूम टाइम एग्जिस्ट एट 4 लेवल. तो क्लासरूम टाइम केतेटा लेवल रे एग्जिस्ट करे 4टा लेवल रे. फर्स्ट होची एलोकेटेड टाइम, केते टाइम एलोकेटेड कराइची. देन आसला इंस्ट्रक्शनल टाइम, केते टाइम गोटे टीचर पढ़ेबारे एंगेज हबो. एंगेज टाइम माने कोन ना गोटे पिला केते टाइम पढ़ारे एंगेज रोची. आ गोटे हला एकेडमिक लर्निंग टाइम, केते टाइम पिलाटा कोन एकेडमी रे रहूची आ केते टाइम से पाठ पढुची. देन आसला आमर नेक्स्ट क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस कौन ना जनकर एबिलिटी बा कैपेसिटी कौन ना अन्य जनकर जदि से फीलिंग्स इमोशन को बुझी पारुची, ताको एसेस करि पारुची, आइडेंटिफाई करि पारुची, सेटा को कहंती इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस इज द फॉर्म ऑफ सोशल इंटेलिजेंस. इट डिस्क्राइब द एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल और सेल्फ परसीव एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड मैनेज द इमोशन ऑफ वन सेल्फ, ऑफ अदर्स एंड ऑफ ग्रुप्स. तो कौन ना जनकर एबिलिटी जोड़ा कि कहली जनकर कैपेसिटी बा एबिलिटी जहाँ फल कि कौन कर से अन्य जनकर इमोशन को आइडेंटिफाई करि परिबो, ता फीलिंग्स बुझी परिबो. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन इट इज इनबॉर्न एंड इट्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी. तो आम समस्ते जानीचे एसबू कौन आमर इनबॉर्न माने आम भितर ऑलरेडी इनहरेंट होइके अच्छी. आम ऑटोमेटिकली जन फीलिंग्स को जानीपारू, से कैपेसिटी भगवान आमको देइचंती. आउ कौन ना इट्स डेवलपमेंट, ये केमिति डेवलप हुए जेते थर आम कौन सोशली समस्त सहित इंटरेक्शन करूँ बा जिते आम माइंडटा मेच्योर हुए से आम जानीपारू अन्य जनकर फीलिंग्स. इट इज रिलेटेड विथ वन फीलिंग्स एंड इमोशन. यहाँ जनकर फीलिंग्स और इमोशन सहित रिलेट होती थाए. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग एंड इमोशन. इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉर्मल इंटेलिजेंस. देन आम जाना डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस कौन कौन डायमेंशन अच्छी. देयर आर 5 बेसिक एरियाज ऑफ डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. दे आर कौन कौन अच्छी. फास्ट होची नोइंग आवर सेल्फ एंड आवर इमोशन. प्रथम फर्स्ट आम आमर इमोशन कौन निज को फास्ट भलसे जाना, सेटा हूँ कौन माने फर्स्ट डायमेंशन आम
मैनेजिंग इमोशन कौन आम आम इमोशन को केमिति मैनेज करवा एस्पेशली मैनेजिंग अनप्लीजेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग इमोशन कंट्रीब्यूट टू फ्लेक्सिबिलिटी इजियर एंड बेटर एडजस्टमेंट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रेजिस्टेंस टू प्रेशर देन आसला मोटिवेशन मूविंग टू ए हायर गोल by undertaking small practicable step needed to achieve the goal and maintaining perseverance to pursue it then asila empathy ame onne mananku kipari empathy dekheba it is related to reading and understanding other feelings from the tone of their voice जनकर कथा शुणिकी जानी कि तार कौन असुविधा अच्छी से दुखरे अच्छी कि से माने कौन निजक लो फिल करें निहाती जापर फेसियल एक्सप्रेशन देखिकी लिखाई फेसियल एक्सप्रेशन नॉट ओनली फ्रॉम द वर्ड्स अटर तो फेसियल एक्सप्रेशन देखिकी कथा शुणिकी आम इमोशन विषय जापर देन आसला सोशल स्किल positive and adjusted behavior is conduct with others which contribute to more successful relationship with the environment and better personal satisfaction तो कौन ना आम जब गोटे पॉजिटिव आउ एडजस्टिव गोटे कैरेक्टर रखा समस्त सहित बिहेव करवा ताहले कौन ना आम सक्सेसफुली समस्त सहित भल रिलेशनशिप एस्टाब्लिश कर देन आसला आमर नेक्स्ट क्वेश्चन इमोशनल क्वेश्चन तो इमोशनल क्वेश्चन कौन EQ इज मेजर ऑफ वन इमोशन एंड इंटेलिजेंट यहाँ यूज कर जाए कौन ना जनकर इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर EQ बट यू मे फाइंड सम पीपुल हु क्लेम टू डिस्कवर वन देन आम जाना कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कौन कौन कंपोनेंट अच्छी so emotional intelligence consist of four basic capabilities or domain these are self awareness प्रथम तो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करवा सेल्फ रेगुलेशन निज को रेगुलेट करवा सोशल अवेयरनेस क्रिएट करवा रिलेशनशिप मैनेजमेंट करवा तो फर्स्ट ये आमर आसला सेल्फ अवेयरनेस आसला नॉलेज एंड योर इमोशन आमर नॉलेज आउ इमोशन को माने कौन एसेस करवा सेल्फ मैनेज योर इमोशन आम इमोशन को आम कंट्रोल करवा मोटिव योर सेल्फ निज को निजे मोटिवेट करवा कि आम सबकि करें देन आसला सोशल अवेयरनेस लोकों मध्य सोशली आम अवेयरनेस क्रिएट करवा रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द अदर पीपल इमोशन अलग लोक मान इमोशन को बुझा रिलेशनशिप मैनेजमेंट आम अन्य सहित जो रिलेशन रखीचु ताकू मध्य मैनेज करने को टाइम दबा मैनेज रिलेशनशिप ऑथरशिप फास्ट आसला आमर सेल्फ अवेयरनेस कौन ना इट इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस आमर पर्सनल केमिति ग्रोथ हम आम केमिति जल्दी सक्सेस अचीव करवा यहाँ क्या डिपेंड करे मेनली आम उपर ही डिपेंड करे आम जदि निजे निजे अवेयर होबा देन आम सक्सेस बहुत भलसे अचीव करिपरिबा डैनियल गोलमैन कॉल्स इट कीस्टोन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस तो डैनियल कौन कही ना सेल्फ अवेयरनेस को इमोशनल इंटेलिजेंस रो कीस्टोन बोली कही प्राथमिक प्रक्रिया हूँ कौन सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करवा अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन द कॉम्पिटेंसीज एसोसिएटेड विथ सेल्फ अवेयरनेस आर कौन कौन कॉम्पिटेंसीज अच्छी ना फर्स्ट तो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस रिकग्नाइजिंग योर इमोशन एंड द इम्पैक्ट दे हैव ऑन योर लाइफ आम आम इमोशन को जानिबा आउ सेटा आम लाइफ उपरे केते इफेक्ट पकाए ताकू मध्य मेजर करवा देन आसला एक्यूरेट सेल्फ एसेसमेंट निज को एसेस करवा आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन आमे कौथिरे अधिक स्ट्रॉन्ग कौथिरे वीक आमर लिमिटेशन कौन ताकू मध्य एसेस करवा सेल्फ कॉन्फिडेंस निज भीतर गोटे कॉन्फिडेंस क्रिएट करवा नोइंग योर सेल्फ वर्थ एंड कैपेबिलिटीज निजर कैपेबिलिटीज कौन अच्छी ताकू मेजर करवा देन आसला सेल्फ रेगुलेशन माने कौन निजर जहाँ भी इमोशन अच्छी फीलिंग्स अच्छी ताकू आम कंट्रोल करवा सेल्फ रेगुलेशन इज मोस्टली अबाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर इमोशन रेस्पॉन्स टू सिचुएशन एंड अदर पीपल अन्य प्रति आम केते एडिक्टेड होचे बा केते अटैच होइचे ताक प्रति हमर इमोशन कौन से सब को आम माने कंट्रोल करिया सिखिबा सेटा होचे सेल्फ रेगुलेशन बट इट इज ऑल्सो अबाउट फीलिंग पॉजिटिव इमोशन एंड एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इमोशन टू अदर्स तो यहाँ को यहाँ यहाँ कहीपर कि आम समस्त को पॉजिटिव इमोशन देखा सी अवश्य आमको गाड़ी दो बाकी आम पॉजिटिवली बिहेवियर करवा सेटा भी गोटे टाइप रहा आम इमोशन रागटा को कंट्रोल करदेलु और सहित पॉजिटिवली कथा हेलु
some of the abilities that are part of self management रो कौन कौन पार्ट अच्छी फास्ट आसला इमोशनल सेल्फ कंट्रोल स्टोर ट्रस्ट ऑर्थनेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्टिमिज्म आउसला अचीवमेंट आउला इनिशिएटिव managing your response and impulsive emotion is an essential part of creating yourself. This is the key to self regulation. Then asila social awareness kono according to Daniel Goleman the competencies associated with being socially awareness हमें क्रिएट करिया केमिति ना एम्पैथी देखै कि ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस क्रिएट करिबा आ कोन सर्विस समस्त को भल सर्विस दबा then asila relationship management allow you to connect with others in ways that help them feel understand and supported आमे समस्त सहित कौन करिया भल संपर्क स्थापन करिया भल से कथबार्ता हवा जेमिति तांकु लो फील न हबो से माने हमको बुझी पारिबे तांकु आमे सपोर्ट करिबा ए सब कोन रिलेशन मैनेजमेंट रो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट managing relationship is essential for emotional intelligence skill that enables you to effectively manage personal change then asla competencies are कोन competencies अछि first la influence आमे केते अन्य मान को influence करिबा inspirational leadership नबा developing others change catalyst conflict management करिया झगड़ा जो सॉल्व करिया building bonds टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन तो यही सब हूँ तार मेन कॉम्पिटेंसी सबू देन आम जा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को रोल ऑफ कल्चर इन द एजुकेटिव प्रोसेस एजुकेशन प्रोसेस रे कल्चर रोल कौन यहाँ बोधे आम आगुरी भी जो आमर थिला आउ गोटे पेपर में आम क्वेश्चन पढ़ी एजुकेशन टा कल्चर सहित बहुत कंबाइनली जॉइंट थाए सो फर्स्ट आम जाना एजुकेशन कौन एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय व्हिच पीपल लर्न न्यू वेज ऑफ टॉट इन एक्शन तो एजुकेशन हूँ गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जोटा कि जीवन तमाम चली थाए इट एनकरेज चेंजेस इन बिहेवियर व्हिच एम एट इम्प्रूविंग द ह्यूमन कंडीशन then asila culture कौन culture is defined and described as the values tradition social political relationship and the world view created share and transformed by a group of people bound together by a common history geographic location language social class and religion तो culture कौन आपण माने जानि छथि हमर जहाँ भी tradition प्रथा परंपरा रहिला सेही सब ही Culture includes not only tangible such as foods, holidays, dress, etc., but also less tangible manifestations such as communication style, attitude, value. यही सब मध्य family relation यही सब मध्य culture रे include थाए. Schools selectively transmit those values and knowledge that a society determines is appropriate through programs तो स्कूल कौन करे बहुत सारा प्रोग्राम अरेंज करे जहाँ फल कौन हुए आमर कल्चरटा ट्रांसमिट हो पारे आउ समस्त को वैल्यू फील हुए Culture determines the standard of behavior. Education is a process by which the society, through schools, colleges, universities, and other institutions, transmit its cultural heritage. Education is initiation into the culture of the particular society into which a child is born. Culture is the content of education and has a bearing on the school administration. School themselves have a culture, a set of norms and ways of working, thinking, talking, valuing and behaving. When the culture of the school reflects the culture of the home or community, the classroom is more familiar to children. तो ये से कौन कहला जदि गोटे स्कूल कल्चरटा गोटे घर कल्चर सहित सामान थी कि जमी स्कूल रे पिला माननकु बिहेव कर जाउछि समिति सॉरी घरे जमी पिला माननकु फ्रेंडली कथबार्ता आम करूँ सपोर्ट करूँ जमी स्कूल रे भी टीचर स्टाफ मैंने सेमती करेंगे से कल्चरटा मेंटेन कर देन कौन हो क्लासरूमटा पिला मानक पई बहुत फेमिलियर हो Student culture and diverse background has a profound effect on student success and failure. तो आम समस्त जाने पिला मानकर बैकग्राउंड आउ तांकर एजुकेशनटा भी कौन तांको सक्सेस उपरे बहुत सक्सेस और फेल्यूर उपरे बहुत डिपेंड करे. Cultural upbringing has influenced student in their approach to learning and social performance.
Teacher provide conscious effort to understand and embrace diverse perspective and cultures. Teacher have a particular responsibility to recognize and structure their lesson to reflect student differences. Teacher also take into account culturally congruity between student home and school to implement culturally responsive teaching. The ultimate goal of diversity education is to have educational model filter into the everyday action of members of the community. Then asila creating a culturally responsive learning environment. आमे केमिति गोटे कोन ना गोटे culturally learning environment गोटे create करि परिबा. So culturally responsive and relevant teaching and learning creates a space in which the teaching and learning relationship build on strength of the teacher, child and family, where children and cognitive, social, emotional and physical development is enthusiastically supported daily. As part of your efforts to work with the experience and asset of your student bring into your classroom, you can कौन कर परिबो ना working in partnership with families and demonstrate high expectation and advocate for young learners. Integrate cultural capital of learning carefully, thoughtfully into the curriculum and value, and cultivate all home languages to support positive learning experience. Ensure curriculum content is engaging and relevant to your student lives and culture. Integrate art, music, movement, making learning visible through photographs. Create a classroom community that is welcoming to all children and families. Build your classroom to reflect the beauty, strength, full capabilities of all children throughout all learning centers. Then asila approaches to promote culturally responsive education. कौन कौन आमर approach अच्छी. Math classroom instruction to cultural norms for social interaction to enhance student social skill development and problem solving abilities, to enhance classroom participation and the development of critical thinking. पिला माने केमिति critical thinking करे से ऊपर focus करिवा. Be sensitive to the cultural shift that immigrant students help parents gain cultural capital, the skill to the education system and knowledge of the norms of behavior that govern school. Use culturally responsive and respectful approaches in character education, social skill instruction and discipline. Then asila kono culturally responsive education support the student in developing a lifelong appreciation for understanding and valuing cultural understanding in all setting of life. Culturally responsive education is a teaching approach that helps student use their cultural background to aid in the acquisition of knowledge, skill and attitude. Then se कहला culturally responsive teachers lend to use an active direct approach to teaching, demonstrating, modeling, explaining, giving a feedback, reviewing and emphasizing higher order skill, avoiding rote memorization. मैंने खाली घोषिबा ऊपर फोकस करंती, पिला माननकु बुझिबा ऊपर बेसी फोकस करंती. ड्रिल एंड प्रैक्टिस और पुनिशमेंट. आउ कौन जदि गोटे पिला भूल करुच्ची देन ताकू पनिशमेंट मध्य दियंती. आमर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज असिस्टेड परफॉर्मेंस, सुपरवाइज्ड डिस्कशन एंड रेसिप्रोकल टीचिंग एज स्ट्रैटेजीज टू एनहांस मोटिवेशन एंड लर्निंग. मन रखु यहाँ गोटे 15 मार्क क्वेश्चन टे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे यूनिट्र, मन रखिए. सो आमे जानिचु कौन ना फास्ट आमे पढ़ा असिस्टेड परफॉर्मेंस कौन. असिस्टेड परफॉर्मेंस डिफाइन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू with help with the support of the environment of others of and of the self. तो assisted performance होची गोटे पिलार परफॉर्मेंस कौन जदि ताकू के हेल्प करंती, सपोर्ट करंती, ताकू गोटे भलो एनवायरनमेंट मिले, देन से कौन परफॉर्मेंस करि परिबो, सेटा होची असिस्टेड परफॉर्मेंस.
For Vygotsky, the contract between assisted performance and unassisted performance identified the fundamental nexus of development and learning that he called the zone of proximal development. तो Vygotsky ताको कौन देइथिले नेम zone of proximal development जोटा कि जेपीडी बोली पढ़ा जाए. For any domain of skill, a JPD can be created. In the JPD, assistance is provided by the teachers, the expert, and more capable peer. Consequently, teaching consists in assisting performance through JPD. Teaching can be said to occur when assistance is offered at points in JPD at which performance requires assistance. Then asila learning within the JPD can be divided into 4 stages. So 4 stage अछि तार. First asila stage number 1. Stage 1 is where performance is assisted by more capable others. The amount of outside regulation depend upon the nature of the task and the characteristics of the learner. In the early stage, the learner may have a limited understanding. The expert offer direction or modeling, and the learner's response are imitative. Sorry, एटा हबो कोन हाँ इमिटेटिव माने इमिटेटेड माने जो आमे गोटे जिनस केमिति शिखु काहा को देखि कि शिखु अन्य को फॉलो करी कि शिखु. तो से सेटा कहिला कि प्राइमरी स्टेज रे कोन हुए ना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थाए पिला मानकर आ कोन एक्सपर्ट जो माने थांती से माने हमको डायरेक्शन देखांती आ तांकु ही देखि कि आमे शिखु तांकु इमिटेट करी कि आमे शिखु. देन आसिला स्टेज नंबर 2. Stage 2 is where performance is assisted by itself. तापरे गोटे पिला निजे करिबो स्टार्ट हुए itself माने निज द्वारा करे. In stage 2 the learners carries out a task without assistance from others. In content it contains the next stage in passing of control or assistance from the expert to the appreciants. Then asila stage number 3. Stage number 3 कौन कहला ना stage 3 is where performance is developed and automatized. Once all evidence of self regulation has vanished, the learner has emerged from the jeopardy into the development stage for the task. The task execution is smooth and integrated. It has been internalized and automatized. Assistance at the stage could be disruptive. Then asla stage number 4. Stage 4 is where de-automatization of performance lead to recursion back through the jeopardy. For every individual at any point in time, there will be a mix of other regulation, self-regulation, and automatization process. There are various means of assisted performance. They are modeling, contingency of management, feedback, ଆଉ କ'ଣ linguistic means of assistance जोटा कि instructing, questioning, and cognitive structuring. So first asila amaro modeling kono na modeling is the process of offering behavior for imitation. Different forms of may be more effective depending upon the conceptual and verbal skill of the learner. Peers model are highly important source of assisted performance. Then asila kono contingency management kono. It is a means of assisting performance by which rewards and punishment are arranged to follow and behavior. तो गोटे बिहेवियर को देखिए आम जो रिवार्ड करूँ कि पुनिशमेंट भल बिहेवियर होते रिवार्ड करा जाए, खराब होते पुनिशमेंट दि जाए. तो यहाँ जाऊँगी कौन कंटिजेंसी मैनेजमेंट रे जाऊँगी. It is the powerful means of assisting performance. It cannot be used to originate new behavior. Then asila feedback. In self-regulation, providing for feedback is the most common and most effective means of self-assistance. In educational programs, feedback regarding performance is vital to every participant. Linguistic means of assistance, instructing, questioning, and cognitive structuring are specially linguistic means of assistance. ये सब जाऊँगी जो linguistic means of assistance under रे. Instruction calls for a specific action. Questioning calls specially for linguistic response. Cognitive structuring provide a structure for organizing element in relation to another.
देन आसला सुपरवाइज डिस्कशन कौन डिस्कशन कैन बी एक्सीलेंट स्ट्राटेजी फॉर एनहांसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन तो डिस्कशन बहुत इंपोर्टेंट लर्निंग प्रोसेस आम जानूँ कौन गोटे स्टूडेंट को मोटिवेशन मोटिवेट करने फॉस्टरिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड एनकरेजिंग डेमोक्रेटिक हैबिट्स व्हेन प्लानिंग ए डिस्कशन it is helpful to consider not only cognitive but also social emotional and physical factors that can be either foster or inhibit the productive exchange of ideas then asila cognitive factor कौन कौन ना फर्स्ट आम कौन करवा डिटरमाइन करवा डिटरमाइन एंड कम्युनिकेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर डिस्कशन टू accomplish something valuable they must have a purpose consider your goal for each question plan a strategy one of the most important thing to consider when formulating a strategy is how to get the discussion jump started ask good question are the key to a productive discussion then asla provide direction and maintain focus discussion tend to be most productive when they have a clear focus मैं आसला ब्रिंग क्लोजर आम डिस्कसन कले गोटे टॉपिक को बेसी क्लोजली जापर इट इज इम्पोर्टेंट टू लीव टाइम एट द एंड ऑफ द डिस्कशन टू सिंथेसाइज द सेंट्रल इशू कम्फर्ट की क्वेश्चन रेज इटीसी देयर आर ए नंबर ऑफ वे टू सिंथेसाइज सोशल एंड इमोशनल फैक्टर कौन कौन सोशल और इमोशनल फैक्टर अच्छी फास्ट आसला कौन डेमोन्स्ट्रेट रिलेवेंस माने कौन ना बिहाइंड एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंस ऑफ डिस्कशन इज जनरल इट इज गुड आइडिया टू पॉइंट आउट द रिलेवेंस ऑफ द पार्टिकुलर डिस्कशन गोटे डिस्कशन रो मेन रिलेवेंसटा कौन से विषय आम जाना अबाउट द सोशल इश्यू योर स्टूडेंट फ्यूचर प्लान इटीसी एनकरेज पार्टिसिपेशन स्टूडेंट मानकर पार्टिसिपेशनटा को एनकरेज करवा some strategies that can help encourage a meaningful student participation they are कौन ना क्रिएट ए डिस्कशन क्लाइमेट आली बहुत जल्दी जल्दी डिस्कशन करवा माने आली स्टेप नवा रिक्वायर स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर डिस्कशन गेट टू नो योर स्टूडेंट मॉडल एग्जाम्पलरी डिस्कशन बिहेवियर क्रिएट ground rules monitor group dynamics assign pair a small group work तो देन से कौन कहला ना मेक हाई क्वालिटी पार्टिसिपेशन काउंट तो ता माने कौन ना इन मेकिंग पार्टिसिपेशन काउंट हाउएवर वन रोन द रिस्क ऑफ एनकरेजिंग टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक रेदर देन फॉर द पर्पज of meaningful and thoughtful exchange then asila evaluate the discussion सरला पर ताको कौन करवा evaluate करवा there are a number of ways to evaluate discussion for example asking the question about the discussion सरला पर जो विषय में डिस्कशन करथलु ताकू नै कि पिला मन को क्वेश्चन पचारिबा देन जे कि आमे कौन करि परिबा ताको evaluate करि परिबा रिजल्ट कौन हैला then asila physical factor try to arrange the physical setup of your classroom so that it is conducive to discussion some instructor prefer that chair be in a सर्कल कौन करवा ना मेनली तो चेयर राउंड सेप रे बसिबा सर्कल सेप रे अदर इन यू सेप रे बसिबा व्हाइल फॉर सम ग्रुप डिस्कशन और डिबेट चेयर मस्ट बी मूव्ड एंड assembled differently if your discussion is a part of small group project that involves hands on construction or manipulation the physical space must be organized accordingly आमर नेक्स्ट क्वेश्चन रेसिप्रोकल टीचिंग कौन ना इट रिफर्स टू एन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी इन व्हिच स्टूडेंट बिकम द टीचर्स इन स्मॉल ग्रुप रीडिंग सेशन तो कौन हुए ना रेसिप्रोकल टीचिंग रे स्टूडेंट माने कौन करती गोटे ग्रुप को गाइड करती टीचर माने जहाँ पढ़ेले ताकू नहीं डिस्कसन करती आउ से ग्रुप को लीड करती से कहगला कि स्टूडेंट माने ये टीचर मान टाइप रो बिहेवियर करती टीचर हेल्प स्टूडेंट लर्न टू गाइड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन यूजिंग 4 स्ट्राटेजीज 4टा स्ट्राटेजीज थाए गोटे हूँ कौन प्रेडिक्टिंग क्वेश्चनिंग देर आसला समराइजिंग देर आसला क्लारिफाइंग प्रेडिक्टिंग कौन ना पिला माने डिस्कशन करती कि नेक्स्ट कौन पढ़ेबे टीचर सो प्रेडिक्टिंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट हाइपोथाइज व्हाट द ऑथर विल डिस्कस नेक्स्ट इन द टेक्स्ट नेक्स्ट कौन पढ़ा ता विषय से डिस्कशन करती इन ऑर्डर टू दिस सक्सेसफुली स्टूडेंट मस्ट एक्टिवेट द रिलेवेंट बैकग्राउंड नॉलेज दैट
that they are already possess regarding the topic से माने जो टॉपिक पढ़िले से विषय केते नॉलेज ज्ञान कले कौन कौन जिनस जानिले से विषय डिस्कशन करती द स्टूडेंट हैव ए पर्पजफुल रीडिंग टू कन्फर्म और डिस्प्रूव देयर हाइपोथेसिस क्लारिफाई माने आपण बुझी पारुचंती गोटे जिनस को आम क्लारिफाई करबा जार जो डिफिकल्टी थिबो सेटा को आम कौन करबा तांको इजीली बुझाई को चेष्टा करबा क्लारिफाई करबा clarifying is an activity that is particularly important when working with students who have a history of comprehension difficulty. Students are taught to be alert to the effects of such impediments to comprehension and to take necessary measures to restore meaning. Example, reread, ask for help माने जो मानकर प्रॉब्लम अच्छे से कौन करेंगे रीड करेंगे माने बारंबार गोटे जिनस पढ़े सपोज से गोटे कम्प्रिहेंशन पढ़ी पार तार जी सब डिफिकल्ट वर्ड थी लिखिकी टीचर को देखेबे सहित कंसल्ट करेंगे हेल्प मागिबे देन आसला क्वेश्चन generating reinforce the summarizing strategy and carries the learners one more step along the comprehension activity. When students generate question, they first identify the kind of information that is significant enough to provide the substance for a question. Generating is a flexible strategy to the extent that student can be taught and encouraged to generate question at many levels. Then asla summarizing कौन ना summarizing provide the opportunity to identify and integrate the most important information in the text. जेतिकी सारा आम पढ़िले ता भितर आम कौन जानिले बेसिक ताको सबू समराइज करवा जेतिकी टेक्स्ट भी पढ़िले text can be summarized across sentence, across paragraph and across the passage as a whole. देन आम जाना यूज ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग को आम केमिति यूज करूँ ना इट एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक अबाउट देयर ओन थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग रीडिंग पढ़ा समय तांकर निजर भावना को एनकरेज करे इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एक्टिवली इनवॉल्व माने गोटे स्टूडेंट एक्टिवली इनवॉल्व हो पारे It teaches students to ask questions during reading and helps make the text more comprehensible. माने कौन करे ना टीचर कौन करती पिला मन को पढ़ाई टाइम रे क्वेश्चन करि पारंती आउ कौन करि पारंती जा फल गोटे कौन हो पारे माने टीचिंग लर्निंग टा बहुत इफेक्टिव हो पारे आउ कम्प्रेहेंसिव हो पारे. देन आसला गोल ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग गोटे रेसिप्रोकल टीचिंग रो कौन कौन गोल रही यूजिंग 4 स्ट्राटेजीज टू इम्प्रूव कम्प्रेहेंशन पिला मानकर कम्प्रेहेंशन स्किलटा डेभलप करे टीचर्स scaffold instruction of the strategy by modeling, guiding and applying the strategy, guide student to become metacognitive and reflective in their strategy use, help student monitoring their reading comprehension skill तो पिला मानकर comprehension skill टाको डेभलप करे use of social nature of the learning to improve reading comprehension. Instruction is provided through a variety of classroom setting, whole group, guide, reading groups and literature services. So एतिकी थिला आमरो लर्निंग एंड टीचिंग रो यूनिट नंबर 5 रो इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन होप कि आपण मानकु भल लागिथिबो जदि आपनकु वीडियोटी भल लागिछि देन वीडियोटी को लाइक करिवे आपण मानकर फ्रेंड मानक सहित शेयर करि देबे आ चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे रहिली जय जगन्नाथ।